Welcome, dear learners. I'm Dr. Ashu Tomar. We'll be starting today's lecture with barriers to communication. Now, basically, barriers to communication is a topic in which we expect a long question. But the topic is noise. We are going to start this topic with the noise because generally a very short question is being asked in the semester. So, what is the meaning of noise? Any unplanned interference in the process of communication is known as noise. Noise is of two types, channel noise and semantic noise. Now, channel noise, when there is any interference in the mechanics of the medium or the channel which we are using for transmitting the message to another person. Like, for example, when you are talking to your friend on a phone, then at that time, if the internet connectivity is not proper, or maybe the telephone lines are not working properly, so in that situation, due to that disturbance or noise, you will not be able to communicate the message information to another person. Another type of noise is semantic noise. Semantic noise, it is generated internally, resulting from the errors in the message itself. Like, you have written a sentence and grammatically the sentence is not correct, or maybe the spelling of the word is not correct. So in that situation, receiver will not be able to understand the information which you are providing to him. Next, barriers to communication. Barriers to communication different types के होते हैं. बेसिकली 5 टाइप्स हैं. सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, फिजिकल और मैकेनिकल, सोशो साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल. We are going to discuss them one by one. Let us start with semantic or language barriers. Now, the barriers which are related to language or the construction of the sentence, those all come under semantic or language barrier. The first point is roundabout style. Now, when you are conveying the information to another person, then you must convey the message in the organization directly without speaking in a roundabout way, because that simply creates complexity and receiver के लिए understand करना भी मुश्किल हो जाता है इस situation में. नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा अनक्लियर मैसेज. अनक्लियर मैसेज है, वी आर नॉट हैविंग एनी क्लैरिटी. एज अ सेंडर आई डू नॉट नो व्हाट इज माय मैसेज, व्हाट इज माय इंफॉर्मेशन. सो व्हेन आई माई सेल्फ इज नॉट क्लियर, तो फिर रिसीवर को भी वो इंफॉर्मेशन क्लियरली ट्रांसफ़र हम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बैरियर और हिंड्रेंस क्रिएट होगा. नेक्स्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन. फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है, लाइक एज अ सेंडर मैंने ट्रांसमिट किया कुछ मैसेज, ना मुझे ठीक से ट्रांसलेट करना आता है हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में, एंड द सेम प्रॉब्लम इज विद रिसीवर टू. सो फ्रॉम बोथ द एंड दिस प्रॉब्लम विल लीड टू बैरियर और हिंड्रेंस. नेक्स्ट इज पुअर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, किस कंटेक्स्ट में बोलना है, जिसकी वजह से रिसीवर इंफॉर्मेशन या मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. तो इस सिचुएशन में, जिससे कि बैरियर ना हो, सेंडर एंड रिसीवर बोथ मस्ट हैव द गुड वोकैबुलरी सो दैट इट विल बी ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द मैसेज. नेक्स्ट आ जाता है आपका बाईपास्ड इंस्ट्रक्शंस. We often bypass the instructions which are given by others. हम कभी भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते ही नहीं, हम हमेशा बाईपास करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैरियर क्रिएट हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमें इंस्ट्रक्शंस है लाइक कि हमें रिमोट प्रॉपरली यूज़ करना है, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो या तो रिमोट ख़राब ही हो जाएगा, ख़राब होने के बाद फिर कॉन्सिक्वेंसेस विल बी फेस्ड बाय receiver. That is why the instructions are to be followed strictly. Next one is poor grammar. भाई ग्रामर ठीक नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स ठीक नहीं लगा रहे हैं सेंटेंस में, तो रिसीवर को आपकी इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आएगी. Lack of common language. When we are having communication with another person, then the common language must be used by both of them.
if I know that receiver will be able to understand in English, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. मुझे पता है कि मेरे रिसीवर को हिंदी लैंग्वेज आती है अच्छे से, तो मुझे भी हिंदी में ही कन्वर्सेशन करना चाहिए, जिससे कि मेरे रिसीवर को भी इंफॉर्मेशन ईजीली समझ में आ जाए. नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. Now many of the words are there. In fact, one word is having many meanings according to the situation or the context where we are using it. It reflects the meaning. तो सिचुएशन या कंटेक्स्ट जहाँ पे यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग हमें समझ जाना चाहिए. अगर एज अ रिसीवर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग, it will lead to barrier. We will not be able to understand the information which is provided by the sender to me. Next is physical or mechanical barriers. Those barriers which are physically visible to us. Basically, they are known as physical or mechanical barriers. The first one is noise. Noise, any unplanned interference in the process of communication. We have discussed this at the beginning. Next is distance. Distance, ज़्यादा distance हो जाएगा सेंडर और रिसीवर में तो ऑटोमेटिकली बैरियर आ जाएगा. Now हमारा रिसीवर हमें टाइम दे पाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी वी आर वर्किंग इन नोएडा and the boss is posted somewhere in Bangalore. He is not able to provide the time because of distance. That is why we will not be able to discuss each and everything with the boss, and somehow it will lead to barrier. The work will suffer. Next is time. Time is also important. We need to have face-to-face interaction. We need to provide time to receiver so that we can understand, so that we can sort out the problems whatever the receiver is having. Now if the boss is not available and he is not ready to provide his time, how as an employee I will be able to give my best output? So because of less time as an employee, as a receiver, barrier create हो जाएगा sender और receiver में. नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड. भाई एक तो होती है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देना, एक है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड हो गई है. जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगी तो रिसीवर उसको समझ ही नहीं पाएगा. इनफैक्ट योर रिसीवर विल गेट कन्फ्यूज्ड and he will not be able to understand the information which you want to provide to him. Next, gender. At times, because of gender too, we face the barriers, hindrances in the company and the organization. Like as a female, I am more comfortable with female boss. As a male, he is more comfortable with a male boss. So just because of different genders, at times it create barrier in the process of communication. Age. One person is young in the company, another person is a middle-aged person, and another one is an old person. Now they are working together in a team on a particular project. So instead of criticizing each other and creating barriers, we must understand the strength of every person, and the workload must also be divided according to that, so that we can give our best instead of creating barriers in the organization. Next one is socio-psychological barriers. Socio-society psychological thinking. So whatever thinking we are having while we are living in the society, that all barriers come under the category of this point. First one, emotions. Now emotions are not having any place in the company or the organization. कंपनी में हम जब भी काम करते हैं इमोशंस को साइड में रखते हुए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, so that we can take unbiased decisions which will not affect the sender as well as the receiver. Differences in perception. Now perception is basically the opinion.
परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, जो हमेशा वेरी करेगा, बिकॉज इंडिविजुअली ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग डिफरेंट बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, their way of behavior, attitude is totally different. So either we are welcoming their differences, then it is good. But if we are not welcoming their observations, then somehow it will lead to barrier in the process of communication. डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, एटीट्यूड इज़ योर अप्रोच, आपकी अप्रोच काम के लिए कैसी है, आपकी अप्रोच दूसरे पर्सन के लिए कैसी है, वो डिफरेंट होगी, लेकिन उस डिफरेंस को यूनिटी की तरह डेवलप करना है जिससे कि बैरियर्स ना आए सेंडर और रिसीवर के बीच में. नेक्स्ट इज क्लोज्ड माइंड. एट टाइम्स आई माई सेल्फ हैव क्लोज्ड माई माइंड. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू स्पीकर. So in that situation, I will not be able to understand anything. I will not be able to bring the feedback, and automatically I am myself is creating a barrier. Next is inattention. मैं attention ही नहीं देना चाह रही है as a listener. जब मैं attention नहीं दूंगी किसी चीज़ को तो मुझे ना तो समझ में आएंगी चीज़ें, और जब समझ में नहीं आएगी तो मुझे फीडबैक भी नहीं देना आएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा उस काम का. इसीलिए अगर हम इनअटेंटिव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बैरियर्स और हिंड्रेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, एंड इन दैट सिचुएशन आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई वर्क प्रॉपरली. Abstracting is summarizing. Whenever we are doing the work, complete study is important. Just on the basis of summary, I cannot take the decision for the development of the organization or for the growth of my department. Distrust. Trust is the only feeling which we must have in the process of communication. Communication बढ़ता जाएगा, ट्रस्ट डेवलप होता जाएगा सेंडर और रिसीवर में. और अगर एम्प्लॉय और सीनियर्स में ट्रस्ट ही नहीं है, they will never be able to understand each other, and they themselves have created a barrier between them. Premature evaluation कर रहे हैं, decision ले रहे हैं, but prematurely ले रहे हैं. Event has not been completed, work has not been completed. Before that I have taken a decision that this work is not at all worthful for me. It is worthless. It is totally a wastage of time. I cannot take any decision before doing the work. I have to complete the work. I have to face the situation. Then only after that I can say or I can take any decision regarding that activity. Cultural differences. People are coming from different states, countries. So that is a good thing. We get the chance to learn from others. But instead of considering it as an opportunity, we create differences just on the basis of the culture, caste. That is why it leads to barrier. Resistance to change. As a human being, we never accept the change. We keep restricted to the routine what I am following daily. We don't know whether this change will be good for us. So every time we must be ready to accept the changes, because if we are learning, if we are moving forward, changes are inevitable. और ये changes हमेशा barrier ही नहीं लाते, changes हमारे लिए growth का sign भी होते हैं. Now the next barriers, organizational barriers. Those barriers which are there in the organization. फर्स्ट वन इज स्टेटस रिलेशनशिप. स्टेटस होती है हमारा डेजिग्नेशन, पोस्ट. हम सब पोस्ट या डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. बट लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, आई मस्ट नॉट हैव एन एटीट्यूड दैट आई एम द सुपीरियर पर्सन ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज सच टाइप ऑफ एटीट्यूड ब्रिंग्स problems, hurdles among the employees in the organization, and it in fact affects our relationship.
Another one is one-way flow. Communication is a two-way process. Sender is conveying the information, message to receiver. But if it is one-way flow, then we will not get the feedback from the receiver. So the communication will remain incomplete, and in fact it is creating a hindrance in the process of communication. Structure of the organization. Every organization has a structure. Higher level of authority, middle level of authority, lower level of authority. This structure is very important so that the work can be done in a systematic manner. अगर कोई स्ट्रक्चर प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में नहीं होगा तो कंपनी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. In fact, it will lead to confusion and chaos in the organization. Rules and regulations are good because the work must be done in a systematic manner and with certain boundary and limit within the company. But too strict rules and regulations hamper the creativity of an individual. And in that situation, we are not able to give our 100% output to the work. That is why at times the work suffers. Next is distance. Distance we have already discussed. The same thing is there in organizational barrier too. Next is poor listening. I myself is not interested in listening to the speaker. So automatically it will lead to barrier. मैं खुद ही नहीं चाह रही क्या मैसेज कन्वे कर रहा है मुझे सेंडर, तो जिसकी वजह से बैरियर आ जाएगा, हिंड्रेंस आ जाएगी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर्स. नाउ इंटरपर्सनल इज बेसिकली अ फेस टू फेस इंटरैक्शन. द फर्स्ट सब पॉइंट इज एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स. सीनियर लेवल ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगी तो फिर मिडिल लेवल ऑफ हायरार्की और लोअर लेवल ऑफ हायरार्की फ्रीली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कम होगा और प्रॉब्लम्स आएंगी, बैरियर्स आएगा, वर्क अप टू द मार्क नहीं होगा. नेक्स्ट इज पुअर हेल्थ. व्हेन आवर हेल्थ इज नॉट गुड, वी डू नॉट फील एज इफ आई वांट टू डू द वर्क. So automatically it creates barrier and it leads to lack of attention because we are not doing, our interest is not in the work, but somehow our interest is in health because the health is not good in that condition. Next one is lack of confidence in subordinates. मेरा ट्रस्ट ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स पे कि वो लोग अपना बेस्ट दे पाएंगे. तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग कम हो जाएगी और सबॉर्डिनेट्स की भी सीनियर के लिए एक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपस में बैरियर्स आ जाते हैं एंड अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू गिव आवर बेस्ट इन द कंपनी. Poor listening, same. Goal conflicts. Now when we are working in the organization, then we are working for the achievement of the goal of the organization first. First priority is to achieve the goals of the company. Second priority is to achieve and focus on personal goals. तो इसमें कोई conflict नहीं होना चाहिए. अगर conflicts होंगे तो हिंड्रेंसेस और बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ में. फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आ रही है तो ठीक है, कोई बैरियर नहीं आएगा. बट इफ द इंफॉर्मेशन दैट इज filtered information is coming out, it means we are not receiving the complete information. So that in that situation there are the chances of barrier. मैसेज ओवरलोड, द सेम थिंग. लैक ऑफ टाइम की कमी है, डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली ये सब रीजंस हैं बैरियर्स के लिए. इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और उसमें बैरियर्स आ जाएंगे. लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट फॉर योर डाउट्स. थैंक यू.